बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले लेक्चर में हमने रैशनल चॉइस थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि रैशनल चॉइस थ्योरी जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक कम्युनिटी वर्कर को क्यों जानना ज़रूरी है और ये कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती है। इससे पहले कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में इसका रोल देखें, हम ये देखेंगे स्लाइड के अंदर कि और कौन-कौन से प्रोफेशंस के लिए और कौन-कौन से सब्जेक्ट में रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। रैशनल चॉइस थ्योरी हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन ऑल टाइप्स ऑफ स्फीयर अफेक्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? रैशनल चॉइस थ्योरी कैन एक्सप्लेन इंडिविजुअल परचेजिंग बिहेवियर। पॉलिटिक्स, रैशनल चॉइस थ्योरी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन वोटिंग बिहेवियर। जिस तरह के इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम वो डिसीजन करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। जब हम वोट कास्ट करते हैं तो हम उसको वोट देते हैं जिसे हमें लगता है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये पॉलिटिक्स पे भी इसका रोल है। द एक्शंस ऑफ पॉलिटिशियन एंड हाउ पॉलिटिकल इश्यूज आर हैंडल्ड। सोशियोलॉजी, rational choice theory can explain social phenomena. This is because all social change and institution occurs because of individual actions. Addiction treatment. Rational choice theory can be used to identify addiction motivation and provide substance alternatives that are equally beneficial to the patient. के पेशेंट को ये बताना है कि उसकी सेहत के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। उसको उसके डिसीजन करने में, जो एडिक्शन क्विट करने का डिसीजन है, उसमें हमें उसका फायदा दिखाना पड़ेगा एज अ कम्युनिटी वर्कर। हाउ रैशनल चॉइस थ्योरी इज यूजफुल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट? When applied to community development, rational choice theory is concerned with finding appropriate rewards and minimizing risk of individuals who become involved in community initiatives. Rational choice theory can be helpful in understanding individuals and collective behaviors. It helps to pinpoint why people, groups, and society as a whole move towards certain choices based on specific cost and rewards. हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आपने इस तरफ मूव करना है, आपने डेवलपमेंट करनी है, तो कौन से चॉइसेस जो हैं आपके लिए बेहतर हैं, कौन सी जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपके लिए बेहतर है। जब तक हम लोगों को उनका फ़ायदा नहीं बताएंगे, वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और फिर वो डेवलपमेंट के काम जो हैं वो रुक जाएंगे। उनको डिसाइड करने के लिए उनको ये एहसास दिलाना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं। Rational choice theory also helps to explain seemingly irrational behavior because rational choice theory states that all behavior is rational. Any type of action can be examined for underlying rational motivation. Rational choice theory can promote inquiry and understanding, helping differing parties like a client and a therapist to recognize the other rationale. In community development, rational choice theory helps community worker to understand the motivation of those they work with. Community worker को लोगों की मोटिवेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है उनकी अपनी फलाह। जब उनको इस चीज़ का पता होगा तो कम्युनिटी वर्कर को ये जानना ज़रूरी है कि वो किस चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, तो उनके उसी फायदे को इस्तेमाल करते हुए वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट का काम कर सकता है और उन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। यूजिंग रैशनल चॉइस थ्योरी, कम्युनिटी वर्कर कैन अनकवर व्हाई पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटी डू सर्टेन थिंग्स and have gotten into certain situation even when they seems unfavorable. कि लोग डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं और वो क्या बिहेव करते हैं, वो क्यों बिहेव करते हैं, जो हमें सामने देखने वाले को समटाइम्स ऐसा लगता है कि उनकी फेवर में नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इंसान हमेशा वो काम करता है, वो डिसीजन करता है जो हमेशा उसकी फेवर में, उससे लगता है कि वो उसकी फेवर में है, बेशक सामने वाले को ये लगे कि वो उसकी फेवर में नहीं है। Rational choice theory can also help community workers when they are designing intervention and treatment.
जब भी कम्युनिटी वर्कर इंटरवेंशन डिज़ाइन कर रहा है या ट्रीटमेंट डिज़ाइन कर रहा है, रैशनल चॉइस थ्योरी उसको इस डिज़ाइनिंग में उसकी बहुत हेल्प करती है। इस तरह हेल्प करती है कि वो लोगों की रैशनल को, उनकी मोटिवेशंस को सामने रखकर इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। Knowing that their client will make decision based on what benefits them, कि लोगों को क्या benefit करेगा। Community worker can use that understanding to guide their interaction with and recommendation for their client. Community worker can use rational choice theory to investigate the meaning behind their client relationship, including with friends, groups, romantic partner, including when those relationships are abusive or seem toxic. Examine why the client behave in certain ways, including engaging in self-destructive behaviors and addictions. कम्युनिटी वर्कर्स को जब रैशनल चॉइस थ्योरी का इस्तेमाल करता है तो वो ये देखता है कि बहुत दफ़ा वो उसको मदद करती है लोगों के, उसके क्लाइंट के बिहेवियर को समझने में। बाज़ औक़ात वो लोग जो एडिक्ट होते हैं, जो किसी किस्म का नशा इस्तेमाल करते हैं, उनको लग रहा होता है कि ये नशा जो है उनकी फेवर में है, वो उनको सुकून दे रहा है, वो दुनिया के गमों से निजात दे रहा है। लेकिन कम्युनिटी वर्कर का ये काम है जो भी कि वो अपने क्लाइंट को ये एहसास दिलाए कि ये इसके फ़ायदे में नहीं है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्लाइंट के फ़ायदे में है। Understand how family dynamics and social interaction affect their client. Create a better relationship between themselves and their client by positioning their work in a way that benefits the client. Promote interventions and create treatment that their client will want to engage in because they see the benefit. Again, वही ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के ऊपर क्लाइंट ज़्यादा काम करेगा जिसमें उसको अपना फ़ायदा नज़र आएगा। Position resources so that client understand how these resources will benefit them. उनको इस तरह से पोजीशन करना है रिसोर्सेज को कि क्लाइंट को लगे कि ये मेरे ज़्यादा फ़ायदे में हैं। When they need to describe, predict and explain human behavior, rational choice theory can be applied. So community worker के लिए रैशनल चॉइस थ्योरी का समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि वो लोगों के इंटरेस्ट को समझ सके। जब वो लोगों के इंटरेस्ट को समझ सकेगा तो वो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट प्लान कर सकेगा, और वही लोग जो कम्युनिटी के लोग हैं उसी सूरत में उस इंटरवेंशन को, ट्रीटमेंट को ऊपर अमल करेंगे जब उनको ये लगेगा कि ये ट्रीटमेंट उनके फ़ायदे में है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि कम्युनिटी वर्कर को इसका जानना क्यों ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।